ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 392 करने वाले हैं। एक मिनट। हाँ, 392 पूछ रहे हैं लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप फेशियल पैल्सी किस किस में मिलती है। ट्रू अबाउट लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप फेशियल पैल्सी। फेशियल पैल्सी इसका सही बात है कौन कौन सी है। ऑप्शन 1 बेल्स पैल्सी इज मोस्ट कॉमन। बेल्स पैल्सी is most common. Option 2 cornea should be protected. Cornea should be protected. Option 3 bilateral paralysis seen in Wilkerson syndrome. Bilateral paralysis seen in Wilkerson syndrome. Wilkerson syndrome. Option 4 unilateral paralysis seen in Mobius syndrome. Unilateral paralysis seen in Mobius syndrome. Option 5 prognosis affected before repeated electric stimulation. Prognosis affected by repeated electrical stimulation. फिर से देखिए ट्रू अबाउट लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप 7 फेशियल पैल्सी. बेल्स पैल्सी इज मोस्ट कॉमन. कॉर्निया शुड बी प्रोटेक्टेड. बायलैटरल पैरालिसिस seen in Wilkerson syndrome. Unilateral paralysis seen in Mobius syndrome. या prognosis affected by repeated electrical stimulation. And the right answer is A and B. Right answer is A and B. That is Bell's palsy is most common and cornea should be protected. Question number 393 देखिए. Question number 393 क्या पूछ रहे? Treatment of diabetes insipidus. Treatment of diabetes insipidus क्या होती है? Option 1 ADH. Option 2 thiazide. Option 3 loop diuretic. Option 4 insulin. या option 5 chlorpromazine. फिर से देखिए ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस. ADH, thiazide, loop diuretic, insulin या chlorpromazine. And the right answer is A and B. That is ADH and thiazide. क्वेश्चन नंबर 393 देख रहे हैं. 394 देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 394 ट्रू अबाउट एडिपोसियर. क्या है? ऑप्शन 1 कॉमन इन ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट. कॉमन इन ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट. ऑप्शन 2 also called saponification, also known as saponification. Option 3 sweetish smell. There is sweetish smell. Option 4 occurs due to gradual hydrolysis and hydrogenation of fat. It occurs due to gradual hydrolysis and hydrogenation of fat. फिर से देखिए ट्रू अबाउट एडिपोसियर. कॉमन इन ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट also known as saponification. Sweety smell due to gradual hydrolysis and hydrogenation of fat. And the right answer is B, C and D. So adipocere is also known as saponification. It has sweety smell and due to gradual hydrolysis and hydrogenation of fat. Question 395 देखेंगे. Question number 395 low hypostasis is seen in poisoning due to. Low hypostasis is seen in poisoning due to. Option 1 H2S. Option 2 phosphorus.
Option 2 phosphorus. Option 3 carbon monoxide. Option 3 carbon monoxide. Option 4 organophosphorus compound. Option 4 organophosphorus compound. या option 5 arsenic. Option 5 arsenic. फिर से देखिए blue hypostasis seen in poisoning due to H2S, phosphorus, carbon monoxide, organophosphate या फिर arsenic. And the right answer is H2S. H2S. क्वेश्चन 396 देखेंगे. 396. Amyl nitrate is used in which of the following poisoning? Amyl nitrate used for poisoning of. Option 1 hydrocyanide poisoning, hydrogen cyanide. Option 2 red phosphorus. Option 3 yellow phosphorus. Option 4 arsenic poisoning. या option 5 lead poisoning. फिर देखिए अमाइल नाइट्रेट यूज फॉर पॉइजनिंग ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, रेड फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, आर्सेनिक या लेड. एंड द राइट आंसर इज हाइड्रोजन साइनाइड पॉइजनिंग. क्वेश्चन 397 देखेंगे. क्वेश्चन 397 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूरोटॉक्सिक. ठीक है ना, व्हिच इज न्यूरोटॉक्सिक. ऑप्शन 1 सी स्नेक. Option 2 Russell viper. Option 3 crate. Option 4 cobra. या option 5 pit viper. देखिए which is neurotoxic, sea snake, Russell viper, crate, cobra या pit viper. And the right answer is crate and cobra. क्वेश्चन नंबर 398 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 398 क्या पूछ रहे हैं. राइगोर मॉर्टिस सिम्युलेटेड बाय. ऑप्शन 1 कोल्ड स्टिफनेस. ऑप्शन 2 हीट स्टिफनेस. Option 3 tetanus. Option 4 strychnine poisoning. Option 5 putrefaction. देखिए राइगर मॉर्टिस सिमुलेटेड बाय कोल्ड स्टिफनेस, हीट स्टिफनेस, टिटेनस, स्ट्राइकनिंग या putrefaction. And the right answer is A, B and E. कोल्ड स्टिफनेस, हीट स्टिफनेस एंड प्यूट्रीफैक्शन. क्वेश्चन 399 देखेंगे. क्वेश्चन 399 वुडमार्क फॉर्मूला इज यूज्ड इन व्हिच पॉइजनिंग. वुडमार्क फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर. ऑप्शन 1 अल्कोहल. ऑप्शन 2 बार्बिचुरेट. Option 3 carbolic acid. Option 4 sulfose. Option 5 lead. Woodmark formula is used for alcohol, barbiturate, carbolic acid, sulfose and lead. And the right answer is alcohol. Question number 400 देखेंगे. 400 visceral leishmaniasis. ठीक है, ट्रू अबाउट visceral leishmaniasis. Option 1 caused by L. tropica. Leishmania tropica. Option 2 post leishmanial dermatitis is common. Post leishmanial dermatitis is common. Option 3 antimonial used for along. ठीक है ना, the antimony is the treatment. Option 4 diagnosed by blood smear. या option 5 vector is phlebotomous
sargenti. Vector is Phlebotomus sargenti. फिर से देखिए, ट्रू अबाउट विसरल लेशमेनियासिस क्या होती है? कॉज बाय लेशमेनिया ट्रोपिका, पोस्ट लेशमेनियल डर्माटाइटिस इज कॉमन, एंटीमोनी इज द ट्रीटमेंट, डायग्नोज बाय ब्लड स्मीयर या वेक्टर फ्लेबोटोमस सर्गेंटी. एंड द राइट आंसर सी एंड डी. एंटीमोनी इज द ट्रीटमेंट एंड डायग्नोज बाय ब्लड स्मीयर. ट्रू अबाउट विसरल लेशमेनियासिस, एंटीमोनी इज ट्रीटमेंट एंड डायग्नोज बाय ब्लड स्मीयर. क्वेश्चन नंबर 401 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 401. एंटेरोपैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर. Enteropathogenic organisms are. Enteropathogenic organisms are. Option 1, Cryptococcus. Option 2, Balantidium coli. Option 3, Microsporidium. Option 4, E. disper. Option 5, Giardia intestinalis. फिर से देखिए, एंटेरोपैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर क्रिप्टोकोकस, बैलेंटिडियम कोलाई, माइक्रोस्पोरिडियम, ई डिस्पर या फिर जियार्डिया इंटेस्टिनलिस. एंड द राइट आंसर इज ए बी एंड सी. Cryptococcus, Balantidium coli and Microsporidium. Enteropathogenic organisms are Cryptococcus, Balantidium coli and Microsporidium. Question number 402 देखेंगे. 402, dying phenomena is seen with. Dying phenomena seen in. Option 1, Proteus mirabilis. Option 2, Klebsiella. Option 3, Proteus vulgaris. Option 4, Providentia. Option 5, Morganella. The dying phenomena is seen in Proteus mirabilis, Klebsiella, Proteus vulgaris, Providentia and Morganella. And the right answer is A and C. That is Proteus mirabilis and Proteus vulgaris. Dying phenomena is seen in Proteus mirabilis and Proteus vulgaris. Question number 403 देखेंगे. Question number 403. Incubation period less than 10 days seen in. Incubation period less than 10 days seen in. Option 1, influenza. Option 2, cholera. Option 3, plague. Option 4, chickenpox. Option 5, rabies. देखिए, incubation period less than 10 days is seen in influenza, cholera, plague, chickenpox, rabies. And the right answer is A, B and C. Influenza, cholera and plague. Question number 404 देखेंगे. Question number 404. Chronic complication of malaria. Chronic complication of malaria. Option 1, splenomegaly. Option 2, nephrotic syndrome. Option 3, pneumonia. Option 4, Hodgkin disease. Chronic complications of malaria are splenomegaly, nephrotic syndrome, pneumonia या Hodgkin disease. And the right answer is A, B and D. That is splenomegaly, nephrotic syndrome and Hodgkin disease. Splenomegaly, nephrotic syndrome and Hodgkin disease. Question 405 देखिए. 405. Used for bioterrorism. कौन सी है? Option 1, smallpox. Option 2, rabies. Option 3, Ebola.
ऑप्शन फॉर इन्फ्लुएंजा या ऑप्शन फॉर ह्यूमन पार्वोवायरस एंड द राइट आंसर इज ए स्मॉल पॉक्स वायरस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।